अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में वी डिस्कस्ड अबाउट हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, जहाँ पे हमने बात की कि किसी भी सबमर्ज सरफेस में जो भी किसी फ्लूइड के अंदर सबमर्ज बॉडी है उसके ऊपर फोर्सेस कैसे कैलकुलेट होंगी इन हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड। एंड वी कैलकुलेट दैट होगी जी एफ दैट रिजल्टेंट फोर्स वुड बी इक्वल टू, कोई बता सकता है किसके इक्वल होगी जी रिजल्टेंट फोर्स हमने कैलकुलेट करनी हो किसी भी सबमर्ज बॉडी के ऊपर? दैट वुड बी डिपेंडेंट ऑन the type of the fluid, which is gamma, the depth of the body centroid below the fluid, and the area or the cross-sectional area on which this force is acting, on which basically this pressure force is acting. And then we thought, okay, what would be the location of this force? Where at this resultant force will act? So we calculated YR, which was equal to IXC divided by YCA, IXC, which is the moment of inertia about x-axis divided by yc, centroidal distance from center from y-axis, and again we will add yc, and then we'll have xr, which is the I xyc moment of inertia about x and y axis, multiplication of moment of inertia about x and y axis, which is generally 0 for symmetric shapes, divided by yc into a plus xc, centroidal distance from the x-axis, from the start of the x-axis. This is the thing we'll be doing. Just give me a minute. ठीक हो गया जी. This is how you will calculate YR and XR. We term the XR and YR contribute or are named a center of pressure. इनको हम कहते हैं जी as center of pressure, and it is the location on the body where this hydrostatic force FR will act. Today we are going to solve a problem related to this topic. The problem is like that. We have a gate that is having a cross section shown in figure. This is the cross section of this gate. This is the gate, and cross section is like that. If I draw it in 3 dimension, it is just something like that. Sorry, it is like that. This is the gate that is stopping the flow of this water, and this gate is closing an opening that is 5 feet wide, which means this length is 5 feet. And 4 feet high in the reservoir. That is, this height is 4 feet. Not the length of the gate, but the height is 4 feet. And the weight of the gate is 500 pounds. So this gate weighs 500 pounds, and the reservoir is that of the water. Reservoir is filled with water. The center of gravity of the gate is 1 feet to the left of the AC. That is, this is point A and this is point C. Normally they will be aligned like here. They are aligned. They are together. So it is 1 feet to the left of the AC, that it is located at 1 feet. This distance is 1 feet here, and 2 feet above BC. That is, it is 2 feet above this point. So center of gravity is somewhere here. I mark it with a green color. This point is center of gravity for this body, which we called as center of mass or the centroid. ठीक है, समझ आ गई थी बात? This is the dimension of the gate, the geometry of the gate. Now, what you should be doing, you should be doing the calculation about the force at C. Determine the horizontal reaction that is developed on gate at point C. The reaction that will be developing at this point, the force at point C.
For this, we need to draw the free body diagram of this gate. So we need to see which forces are acting on this gate. So we draw the gate. This is the gate. We draw its dimension, like say this height is 4 feet. This width is 3 feet. And into the page it is 5 feet. Okay, this is 4 feet, this height, and this is 3 feet. Okay, Ji. Now you are going to help me with the forces acting on this free body diagram. The lines in green are presenting your gate. This is point A, this is point B, and this is C. So how many forces will act on this gate and at which locations? You all have studied engineering statics and you are all very well versed with drawing free body diagrams. So now help me with the forces acting on this gate. ग्रीन लाइन नजर आ रही है आपको ट्रायंगुलर शेप में ABC जिनके अराउंड लिखा हुआ है ब्लैक लाइन ड्रॉ? जी सर अब नजर आ रही है जी। इसके ऊपर आपने मुझे फोर्सेस बतानी है। ऊपर आप फिगर देख रहे हैं जो वाटर के अंदर बनी हुई है और नीचे जो मैंने इसको दोबारा से ड्रॉ किया है। अब मुझे फोर्सेस बतानी है कि इस पॉइंट पे कौन कौन सी फोर्स लगेगी। लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट ए। पॉइंट ए पे कौन सी फोर्सेस होंगी? सर पता नहीं यहाँ पे लैग कर रहा था, मुझे सही से समझ नहीं आ रहा था। ओके, पॉइंट ए पे दो फोर्सेस होंगी सर, AX और AY। जी, देयर सर विल एक बी ऊपर और बिकॉज़ एक इट्स अ हिंज, इट्स अ पिन। तो पिन के ऊपर आपके पास दो रिएक्शंस आते हैं, आप सबको रिएक्शंस पता है। यू विल हैव वर्टिकल फोर्स AY and you have horizontal force AX. Clear? इसके अलावा जी सर एक ये AB जो सर कंपोनेंट है इसके ऊपर भी एक फोर्स करेगी, अगर हम उसे F1 कहते हैं फॉर सपोज। पॉइंट बी पे तो कोई फोर्स नहीं होगी। नहीं सर, A और B के दरमियान में सर नॉर्मल एक फोर्स यानी Yes, उसके there ऊपर will एक्ट be कर a रही होगी। vertical force or there will be a normal force. AB के perpendicular एक force act करेगी which will be your resultant force। ऐसे ही है, इसको हम कह देते हैं F1। इसके अलावा सर BC के ऊपर भी सर एक नॉर्मल यानी there जो will be a force resistance exerted by the water pressure from the bottom। ठीक है जी, we call it F2। Clear? And as stated in the problem, there will be a horizontal reaction force at point C, क्योंकि गेट ने खुलने के लिए यहाँ पे आपको ये फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ आ गई? इसके अलावा कोई फोर्स थी? सर इस जो गेट से बना हुआ है इसका वेट भी होगा सर, फिर वो भी Because नीचे the की तरफ gate is एक्ट weighing करेगा। 500 pounds, so it should have a weight acting at center of gravity and should be vertically downwards। ठीक है, यहाँ पे वो फिगर में यहाँ पे वेट एक्ट करेगा। ठीक है, इस तरह से वेट की फोर्स होगी। क्लियर हो गई? समझ आ गई सबको? ए बी पे नॉर्मल फोर्स वो समझ नहीं आई। ए बी पे नॉर्मल फोर्स, ये जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि जब भी हम किसी बॉडी को सबमर्ज करेंगे वाटर के अंदर या किसी भी फ्लूइड के अंदर, तो उसके नॉर्मली जो है वो एक फोर्स एक्ट करेगी, उसके एरिया के नॉर्मल एक फोर्स एक्ट करेगी। लास्ट क्लास अगर आपको याद हो तो हमने कंटेनर्स बनाए थे दो, और हमने कहा था कि साइड वॉल्स पे क्या हो रहा है, इस तरह से प्रेशर चेंज आ रही है, बॉटम वॉल पे क्या हो रहा है। तो उसके बाद हमने एक जनरल केस डेवलप किया था जी, इस तरह से हम एक बॉडी है जिसको हम प्लेस करते हैं किसी एंगल थीटा पे लिक्विड सरफेस के अंदर, तो उसके ऊपर फोर्स क्या होगी, वो रिजल्टेंट फोर्स हमने कैलकुलेट की थी, ये वही वाली रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक है, तो इस बॉडी के दो पार्ट हैं, ओके एक ये इंक्लाइंड पार्ट है और एक ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है। तो हॉरिजॉन्टल पार्ट पे भी फोर्स एक्ट करी है FR, जिसको हमने F2 कह दिया, और जो इंक्लाइंड पार्ट है उस पर F1 एक्ट करी है। ठीक है,
ओके जी, मूविंग ऑन। अगर आप लोगों की समझ आ गई फ्री बॉडी डायग्राम, वी नाउ जस्ट नीड टू कैलकुलेट फोर्सेस F1, F2 एंड FC। ठीक है, जितनी भी अननोन फोर्सेस हमें कैलकुलेट करनी है। स्टार्टिंग विद F1, किसके इक्वल होगी जी F1? इट वुड बी इक्वल टू गैमा ऑफ वाटर इनटू HC1 इनटू एरिया 1 ऑन विच F1 इज एक्टिंग। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू, लिख दूं 62.4 मल्टीप्लाई बाय HC1 किसके इक्वल होगा जी? जी, एनी आइडिया HC1 किसके इक्वल होगा? HC is the depth at which the centroid of the body is located from the free surface. So we can see कि हमारे पास 8 feet is the depth till the start of the gate, और उसके बाद फिर 4 feet टोटल गेट की हाइट है, जो गेट जिस पार्ट के अंदर लोकेटेड है। उसमें हम अगर ये देखेंगे कितने सेंट्रॉइड कहाँ पे लोकेटेड होगा, दैट इज 2 feet above the line BC। यहाँ पे 2 feet है इससे ऊपर, तो इसका मतलब HC1 क्या होगा? दिस लेंथ इज, दिस डेप्थ इज HC1, clear, and it would be equal to 8 plus 2, that is 10 feet। ये actual depth है plus 2 feet जो centroid की depth है, so it is 10 feet। So we'll write here 62.4 into 10 multiply by area of 1। एरिया क्या होगा 1 का? दैट वुड बी 5 feet जो कि उसकी डेप्थ है इनटू द पेज, मल्टीप्लाई बाय इट्स विड्थ। विड्थ कितनी है जी? वी नो द हाइट इज 4 feet, तो हमें वो इंक्लाइंड लेंथ कैलकुलेट करनी है। दैट इंक्लाइंड लेंथ वुड बी इक्वल टू 5 feet। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो इंक्लाइंड लेंथ। So your force at point 1 would be 15,600 pounds। Clear? Is it clear? यस सर। ठीक है, एरिया 1 कैलकुलेट कर लेंगे ना। एरिया 1 जो यहाँ पे ऐसे जो बॉडी बन रही है जिसका, तो आपके पास ये 5 feet नोन है, ये आपको 5 feet बताया हुआ है। ये वाली हाइट लेंथ आपने कैलकुलेट करनी है जो इंक्लाइंड लेंथ है, तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे इट विल कम आउट टू बी 5 feet। कैसे 5 feet आएगी? दिस इज 3, दिस इज 4, तो ये उसका हाइपोटेन्यूज है। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगी। ठीक है, 9 plus 16 अंडर रूट 5, so that would be equal to 5। ठीक है, तो एरिया would be 5 into 5। Next we calculate force F2। So F2 would be equal to P2 into area 2। ठीक है, and P2 would be equal to gamma of water into H2 and area 2। The force to कहाँ पे एक्ट करिए? At the bottom of the gate। ठीक है, and that is deep enough equal to the total depth of the water, यहाँ से लेकर यहाँ तक, that would be equal to 8 plus 4। ठीक है, F2 would be equal to, H2 would be 12 and F2 would be equal to 62.4 multiplied by H2 that is 12 feet multiplied by A2 that would be कितना होगा जी A2? 3 multiplied by 5। ठीक है,
दिस शुड बी इक्वल टू, अगर आप कैलकुलेट करेंगे 62.4 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 15, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 15, 11,232, ठीक है। 11,232 pounds. Is it clear? क्लियर है जी? यस सर। अब हमने इन दोनों फोर्सेस का एक्स आर और वाई आर कैलकुलेट करना है। वी नीड टू कैलकुलेट एक्स आर एंड वाई आर। We need to calculate XR1, YR1, and we need to calculate XR2, YR2. ये कैलकुलेट कर सकते हैं XR और YR। फॉर्मूला हमें नोन है XR और YR का, ठीक है, बिकॉज इट इज अ सिमेट्रिक शेप। सिमेट्रिक शेप का जो एक्सिस है वो सेंट्रॉइड के बीच में से पास करेगा और जो फोर्स है वो भी सेंट्रॉइड पे ही एक्ट करेगी। सो XR वुड बी इक्वल टू XC इन बोथ केस, ठीक है। तो XR जो है दोनों केसेस में, XR1 वुड बी इक्वल टू सेंट्रॉइड ऑफ दैट बॉडी, so XR1 would be equal to XC and XR2 would be equal to YC, sorry XC as well, ठीक है। दोनों XC के इक्वल ही होंगे। लास्ट इज YR। पहले हम YR1 कैलकुलेट करते हैं। YR1 should be equal to IXC1 YC1 by A, IXC1 divided by YC1A plus YC1, and YC1 is the distance from origin to the centroid along y-axis, ठीक है। Because it's a rectangular body, तो IXC1 तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं using 1/12 AB cube, ठीक है, AB cube, and we know A is 5 and B is 5, so 1/12 divided by 1/12 multiplied by 5 and 5 cube. We also know A to be 5 into 5. What is YC1? इसकी वैल्यू क्या है जी, बता सकते हैं YC1 क्या होगा? We know HC1, ऐसे ही है, HC1 हमें known है, and we know HC1 is equal to YC1 sin of थीटा, और थीटा यहाँ पे कौन सा एंगल है? थीटा इज दिस एंगल, ठीक है। तो यहाँ से हम अपना रीजन ड्रॉ करना शुरू करें तो यहाँ पे फ्री सरफेस से जाके ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, दिस इज थीटा। और हमें HC1 नोन है, थीटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं जी। थीटा कैलकुलेट हो सकता है? यस सर। कितना होगा थीटा? सर tan inverse 4/3. We have this triangle with us as 3 and 4, 5, and we need to calculate this angle theta. So this would be equal to sin of theta किसके इक्वल होगा जी? इस ट्रायंगल को देखते हुए sin of theta बता सकते हैं?
4/5 sir. 4/5, ठीक है। एंड HC1 इज, हमने भी यूज किया HC1 इक्वल टू 10, सो 10 इक्वल्स टू YC1 into 4/5। तो यहाँ से हमारे पास YC1 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 10 into 5/4 इज 12.5, ठीक है, इज 12.5 फीट। क्लियर? तो हम इससे YR1 बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्वेशन में सब कुछ नोन हो गया। So IXC, which is 1/12 into 5 raised to the power 4, divided by YC1, which is 12.5 into area, which is 5 multiplied by 5 plus YC1, which is 12.5. So it comes out to be 12.67. Okay, this is the location of resultant force 1 along the y-axis, on y-axis. Clear? And XR1 is equal to XC1. XC1 कितना होगा बता सकते हैं जी? फीट जी। एनीवन, XC1 कितना होगा? फिगर को देखते हुए कुछ XC के बारे में अंदाजा हो रहा है? सारे XR CR CR के इक्वल कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? क्योंकि इट्स अ सिमेट्रिकल शेप, तो XI क्या होगा? ये जो टर्म जिसको मैं सर्कल लगा रहा हूँ, और सिमेट्रिकल शेप दिस वुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। जब ये 0 होगा तो XR के वो कैसे, उसके लिए आप लास्ट लेक्चर देखें, उसके लिए आप लास्ट लेक्चर में रेफर करेंगे। लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की थी सिमेट्रिकल शेप के साथ क्या होता है, और सेकंडली आपकी असाइनमेंट भी है, ठीक है। जब ये 0 हो जाएगा तो XR वुड बी इक्वल टू XC। फॉर ऑल सिमेट्रिकल शेप्स यूजुअली ऐसा ही होता है। तो XC1 क्या होगा? एनीवन जी? कोऑर्डिनेट एक्सिस याद है किस तरह से थे? एक्स एक्सिस कौन सा एक्सिस है फिगर के अंदर? दिस इज योर वाई एक्सिस, ऐसे ही है अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। तो XC1 कितना होगा? फॉर रेक्टेंगल सेंट्रोइड इज लोकेटेड एट द मिड पॉइंट ऑफ द रेक्टेंगल। जी, मिड पॉइंट ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो कितना होगा फिर ये XC 2.5 हो जाएगा। 2.5, ठीक है। सो XC1 इज 2.5 feet. This is the center of pressure for force 1. अब आ जाते हैं YR2 पे। YR2 क्या होगा जी? Because it's a rectangle like this, ऐसे ही है। अगर आप देखेंगे तो इस तरह से रेक्टेंगल, इसकी ये विड्थ रीड्रॉ कर दूं आपको, ये थोड़ा सा इस तरह का रेक्टेंगल, ठीक है। ये लेंथ छोटी है 3 feet and this is 5 feet. This is 5 feet or the, and this is 3 feet और दी दिस इज लाइन BC, ठीक है। उसको अब हमने आपको 3 डायमेंशन में आप उसको देख रहे हैं, ठीक है। दिस इज योर y एक्सिस, ऐसे ही है y एक्सिस है, BC along y एक्सिस है।
सर BC along y axis है। नो, BC y एक्सिस के अलोंग नहीं है, ठीक है। इसके लिए सिंपल, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी सिमेट्रिकल बॉडी और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसके ऊपर इसने एक्ट करना है, इसको मैं आपको बना के दिखाऊं, इस तरह से होगा कुछ, ठीक है। गेट 3 डायमेंशन में उसको विजुलाइज करें, प्लेनर व्यू को छोड़ दें, ये प्लेनर व्यू छोड़ दें, इस 3 डायमेंशन में देखें और इसके ऊपर फोर्स एक्ट करिए नीचे से। दिस इज फ्रॉम द बॉटम F2। तो फोर्स किस लोकेशन पे एक्ट करेगी? 1.5 फीट फ्रॉम दिस 3 फीट लेंथ, ऐसा ही है। सेंट्रोइड जो इसका बनता है, दिस इज 1.5 फीट एंड 2.5 फीट फ्रॉम आइदर साइड, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ प्रेशर जो सेंटर ऑफ मास के इक्वल है, ठीक है। समझ आ गई बात? यस सर। इसके लिए XR और YR कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मूविंग ऑन, आपसे पूछा ही जा रहा है कि आपने FC बतानी है, ठीक है। वी नीड टू कैलकुलेट FC। FC के लिए हम क्या करते हैं, वी अप्लाई इक्विलिब्रियम अबाउट फोर्सेस अबाउट पॉइंट A, ठीक है। दिस इज अवर पॉइंट A और इसके अबाउट हमने इक्विलिब्रियम फोर्स है, तो AX और AY का मोमेंट तो 0 हो गया। मोमेंट हमारे पास आएंगे F1 का, वेट का, F2 का और FC का, ठीक है। सो वी स्टार्ट विद F1। F1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ F1, दिस होल मोमेंट सिग्मा m should be equal to 0 about this point. We write ma and this should be anti-clockwise moment should be positive, ठीक है। So we start with F1 multiply by its perpendicular distance from point A। क्या perpendicular distance है जिसका point A से? 2 फीट सर। 2 फीट होगा। अब इसको इस तरह से देखते हैं। Let me redraw the line, dashed line option। ये आपका लाइन है, ठीक है। ये उसका फ्री सरफेस है। This distance is known to you as, this vertical distance as 8 feet। This is the point where F1 is acting and this is the distance YR1, ऐसा ही है। नो दिस एलिवेशन एज वेल, ऐसा ही है जी। एंड दिस इज डिस्टेंस Y एंड दिस इज योर पॉइंट A। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है जी? पॉइंट A से लेकर ये जो डिस्टेंस, क्योंकि परपेंडिकुलर ही है एग्जैक्टली इसके, ठीक है। दिस रेड कलर लाइन इज इंडिकेटिंग दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट मोमेंट R। ये डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है। दिस शुड बी इक्वल टू YR1 which we have calculated earlier minus Y, ऐसा ही है जी। बिल्कुल सर। ठीक हो गया, समझ आ गई बात? एंड वी नो Y किसके इक्वल होगा जी? दिस H डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा, ऐसा ही है। सो H इज 8 डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा विच वी कैलकुलेटेड अर्लियर इज 4/5, ठीक है। साइन ऑफ थीटा इज 4/5, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट, एंड दिस मोमेंट इज एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट मोमेंट है हमारे पास वेट फोर्स का। वेट यहाँ पे एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स एंड इट इज एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है जी पॉइंट A से?
दिस इज पॉइंट ए। तो मैं नीचे दोबारा से फिगर यहाँ पे तरह से ड्रॉ करके समझाता हूँ आपको। फिगर तो होगी F1 की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेट, लेट्स से दिस इज योर पॉइंट ए, this is the line joining point A and C, and this is your weight force acting downwards. कितना perpendicular distance है point A से? If this is acting at center of gravity, this is center of gravity. तो weight कितने perpendicular distance पे act कर रहा है point A से? 1.5 सर। Center of gravity कहाँ located है body का? It weighs 500 pound and its center of gravity is 1 feet to the left of AC. So this point is, the center of gravity is 1 feet. So this 9 in green is representing the perpendicular distance. This is 1 feet. Clear? So this 1 feet is the perpendicular distance. Clear हो गया? So we will add, and this moment is also anti-clockwise weight multiply by this 1 feet. Finally, the moment of F2. So again, इसी line के ऊपर आते हैं. This is your point B, and we know F2 is acting at the center of this point. So F2 multiplied by its perpendicular distance, that would be 1.5. ठीक है? F2 into 1.5 because it's at the center of line BC, and it would be generating clockwise moment, क्योंकि downward अगर anti clockwise generate करेगी तो upward जो है वो clockwise generate करेगी. And the last force is FC, this FC, ठीक है? And it is at a perpendicular distance of this height, which is 4 feet. So FC multiplied by 4 feet. We'll write FC multiplied by 4. And as rightward force is generating, this F1 is generating anti-clockwise, so this FC should be generating clockwise moment, so negative sign. It should be equal to 0. Moment of AX and AY would be 0 because they have no moment arm. They are passing through point C. हमें तमाम values known except FC. ऐसे ही है? So we'll just rewrite the equation as FC equal to, now I'm writing the terms in values. We know F1 as 15,600 multiplied by its moment arm, that is Y1 we have just calculated as 12.67 minus Y, which will be equal to 8 divided by 4 by 5. So we calculate it to be 8 multiplied by 5 divided by 4 as 10. This is 10 plus weight, which is 500 pounds, into 1, and minus F2, which we have calculated as 11,232 multiplied by 1.5, and divide this whole by 4 moment arm of FC. This will give us the required answer for FC. So this is the force required to move the hinge if we want to open the gate. The 15,600 multiplied by 12.67 minus 10. Answer plus 500 minus 11,232 into 1.5, and answer divided by 4. 6,326. So answer is 6,326 pounds. Clear? Is it clear to you? Yes, sir. Any question in this problem?
डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सर वेट कंपोनेंट के लिए जो 1 आपने सर वो लेंथ ली थी उसकी नहीं समझ लगी 1 कहते हैं। वेट के लिए हमने 1 लेंथ क्यों ली है? जस्ट लेट मी रीड्रॉ। दिस इज योर ट्रायंगल, ठीक है जी, एंड वी रीड्रॉ इट विद till the point यहाँ पे। ठीक है, दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी। अब आपने मेरे एक क्वेश्चन का जवाब देना, वेट कहाँ एक्ट करता है बॉडी का हमेशा? सेंटर ऑफ मास पे सर, सेंटर ऑफ सेंट्रोइड। मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रोइड, जो भी इसको कह रहे हैं। आपको ये बताया कि वेट 500 पाउंड एंड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द गेट इज 1 फीट टू द लेफ्ट ऑफ एसी। ये एसी है आपकी, ये स्ट्रेट लाइन से जॉइंट हुए हैं, लेट्स ड्रॉ इट विद स्ट्रेट लाइन। ये एसी पॉइंट है आप, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ से 1 फीट अगर आप लेफ्ट की तरफ आए, टोटल लेंथ 3 फीट है, तो हम 1 फीट, लेट्स से वी कम 1 फीट लेफ्ट, लेट्स से दिस इज 1 फीट, ठीक है, एंड देन 2 फीट अबव बीसी, ठीक है। तो ये लाइन बीसी है, यहाँ से हमने 2 फीट ऊपर की तरफ जाना है, 1 फीट एंड देन 2 फीट, दिस इज ऑलमोस्ट 2 फीट, ठीक है, ये 2 फीट है। तो जहाँ पे ये दोनों क्रॉस करेंगे वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, so दिस इज योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे वेट एक्ट कर रहा है। अब वेट का Yes, परपेंडिकुलर sir. डिस्टेंस कितना है पॉइंट ए से? आप फिगर देख के बता सकते हैं? सर 1 फीट। यस सर। 1 फीट, ठीक हो गया, समझ आ गई बात? यस सर। इसी तरह F2 जो है वो इस बॉडी के सेंटर में एक्ट कर रही है, बीसी गेट के सेंटर में एक्ट कर रही है, नॉट 1 फीट बट एट द सेंटर ऑफ, सो इट इज 1.5, 3 फीट टोटल लेंथ है ये वाली, ठीक है, दिस इज 3 फीट, तो इसको आप 3 फीट को हाफ करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। क्लियर हो गया?